बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट में आज का हमारा टॉपिक जो है वो लोकल लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट का पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सोशल डेवलपमेंट होती क्या है। सोशल डेवलपमेंट includes the understanding of existing conditions of local level communities, setting goals by engaging local people, and employing specific strategies while following values, principles, and processes appropriate to the all levels and dimensions. To achieve good results in the application of social development at the local community level, the following 6 steps may be followed. The first 3 steps provide knowledge, skills and competencies, जिसको आज के इस लेक्चर में जो है हम पहले 3 स्टेप्स के बारे में ही बात करेंगे, जो कि नॉलेज प्रोवाइड करता है, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करते हैं. एंड द अदर 3 स्टेप्स डिमॉन्स्ट्रेट देयर यूज एट द लोकल लेवल. तो पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है अंडरस्टैंडिंग द सोशल डेवलपमेंट अप्रोच. सबसे पहले जब भी हम लोकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट थ्रू लोकल डेवलपमेंट थ्रू सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि सोशल डेवलपमेंट की अप्रोच कौन सी अप्रोच है और वो क्या है. Anyone interested in participating local level community development, including social workers and social and community development workers, should understand the philosophy, the spirit, and the functionality of the social development approach. Such understanding can be gained by self-reading, attending training programs such as relevant university courses, seminars, and workshops, and by visiting and observing local villages and communities. This should be kept in mind that social development is very, very different from economic development. हम पिछले कुछ लेक्चर्स में economic development की बात कर चुके हैं और जब आप ये लेक्चर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि social development economic development से बहुत ही मुख्तलिफ है. The focus should be on the current state of local community, the goals they want to achieve for their families and communities, how certain values, principles, and processes need to be guide action, and how the conscious use of range of strategies can help make progress across the dimension of communities. दूसरी जो इसका स्टेप है वो है sticking to values, principle, and processes. The 5 key elements of the processes are that it be participatory, empowering, equitable, based on human rights, and sustainable or ecological, sensitive, and sound. Taken together, these 5 aspects of development process are very far-reaching and in practice quite difficult to implement, which explain why which local community level development in practice fail to live up to these ideals. It is much easier to do things and for people without the participation. Empowering people can backfire and lead to some people making inappropriate or difficult demands on other levels such as national level. अगर आप इन लोगों को जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लोगों की में कॉन्फिडेंस का नहीं इंक्रीज करेंगे, सेल्फ हेल्प नहीं सिखाएंगे तो समटाइम्स, और आप उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर नहीं करेंगे तो ये चीज़ समटाइम्स बैकफायर करती है. ज़रूरी नहीं कि वो उसी मुकाम पर करे बल्कि किसी और जगह पर भी वो कर सकती है. People, communities, workers and organization need to develop an uncompromising commitment to achieving the goal of promoting people's well-being or quality of life and empowering people to gain freedom in order to satisfy their aspirations and realize their potentials. While working with individuals, families, groups, communities, and organizations, workers need to demonstrate respect for people and believe in their capacity and a holistic understanding of human existence. जब भी आप लोगों के साथ काम करें, जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, स्पेशली एट द लोकल लेवल, आपको ये बिलीव होना चाहिए उनकी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर,
उनकी कैपेसिटीज के ऊपर, और आपको ये बिलीफ जो है वो आपने शो करना है अपने एक्शन से और अपनी कम्युनिकेशन से. Nature and ecology and support pluralism, non-discrimination, and human rights. By enabling and engaging people, they need to follow empowering and participatory process. पार्टिसिपेटरी अप्रोच के बारे में हम पूरे सेमेस्टर में जो है, पूरे लेक्चर्स में जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब तक आप लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर नहीं करेंगे लोकल लेवल के ऊपर भी, तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते. By practicing such values, principles, and processes may appear challenging, at least initially, perhaps due to vested interest and dynamics of community power structure. Power structure से क्या मुराद है कि वो लोग जो पावर में हैं उस कम्युनिटी के अंदर, या जिनका होल्ड है, या जिनकी बात को माना जाता है. But in the longer term, it will prove effective and useful. Number third step क्या है? Developing competencies to use strategies. The foremost basic requirement for local level community development are: first, where necessary, building of self-confidence and self-esteem and awareness raising. Secondly, capacity building with individual, families, and local organizations. Third, income generation. And fourth, developing community resources. The balance and interaction between these in intervention at the local level is crucial. In those situations where self-confidence and self-esteem are at low level, it is imperative to address this need. At the same time, it may be difficult to address it directly and in isolation from other needs, largely because the need may not be even recognized by many people. जब मैं पहले अभी आपसे बात कर चुकी हूँ, सब टाइप्स जो होता है कि उस नीड को लोग recognize ही नहीं कर रहे होते. Indeed, building self-confidence may sometimes best be addressed indirectly by, for example, focusing on capacity building while carefully building self-confidence in the process. आप देखें कि बहुत चीज़ों को हम इनडायरेक्टली भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं, उनकी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं. जब मैं ये महसूस करूंगी कि मेरी स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो गई हैं, तो मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज करेगा. Workers and organization needs to develop skills to use capacity building strategies to enhance capacities of individual, families, small groups, local organizations, or other entities. The strategies may range from a very informal approach to a reasonable formal one. Workers and organizations first need to develop their own self-confidence and self-esteem, awareness of these and similar strategies and capacities and skills to effectively use them at appropriate level within the local level community. Most important, they need to focus on cultivating the virtues of courage, confidence, commitment, honesty, selflessness, love and hope. तो आज के लेक्चर में हमने पहले 3 स्टेप्स को पढ़ा है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया है जिनसे कम्युनिटी की स्किल और कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है. अगले लेक्चर में हम अगले 3 स्टेप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.